Under section 149, we are going to understand that how the delivery of the belly is being done. Okay, so we have understood the delivery happens when the goods are given to the belly or someone authorized to receive them on behalf of the belly. Under section 149, it has been explained that, for example, I am going to the shop of the mobile shop. Okay, so when I am going to the mobile shop, at the specific shop, I am giving my phone to the mobile shop for the repairing purpose. Okay, so when I'm giving my mobile to the shopkeeper for the purpose of repairing it, what happens there? It is called as the delivery of the goods to the shopkeeper, who is the belly, and I am being the beller over here because this mobile belongs to me, and I am giving this mobile to the shopkeeper for the specific purpose of repairing it. My primary intention behind giving the mobile phone to the shopkeeper is to repair the mobile phone. समझ रहे? मोबाइल फोन मैं शॉपकीपर को किस पर्पज के लिए दे रही हूँ? मेरा प्राइमरी पर्पज क्या है? टू रिपेयर इट. मैं चाहती हूँ कि मेरा फोन में जो भी दिक्कत है वो ठीक हो जाए. आई वॉन्ट माई मोबाइल फोन टू बी रिपेयर्ड एंड दैट इज वाई आई एम गिविंग द मोबाइल फोन टू द शॉपकीपर. क्लियर? So here, when we are talking about the delivery of the belly, delivery to the belly, delivery of the specific goods to the belly, so how it is been done? It happens when the goods are given to the belly or to someone authorized to receive them on behalf of the belly. When the goods are given to the belly, जब ये goods जो है वो belly को directly दिया जाता है या someone authorized on behalf of the belly, अगर belly के तरफ से someone is there who is authorized to receive the goods, अगर any other specific person other than the belly is receiving the goods, that is also called the delivery of the belly is being done. Okay, then comes under section 150, which exactly speaks about the duty to disclose faults, which has been explained under section 150. So when we're talking about the disclosure of the faults to the belly, it is the primary duty of the beller. When the beller is providing any kind of the specific thing to the belly, it is the duty of the beller to disclose the faults associated in the specific product or the specific goods. Okay, so the beller must tell the belly about any known faults in the goods that could interfere with the belly's use of the goods or expose the belly to risk or harm. Okay, if I have taken something or some specific property from you as the under the agreement of the bailment, so it is my basic right to enjoy the property or not? Yes, or to use the goods? Obviously. For example, you are giving me your bike as the bailment for the purpose of enjoying it for the duration of 1 month. Okay, आप मुझे ये चीज बोल रहे हो कि देखो मैं तो बाहर जा रही हूँ, तो एज आई एम गोइंग आउट मेरा ये जो बाइक है ये तो मेरा काम काम पे नहीं आने वाला है, तो तुम एक काम करो, मेरा ये बाइक रख लो. सो व्हेन एवर यू वांट यू कैन यूज दिस बाइक, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बाइक को यूज कर सकते हो. ओके, सो यू आर गिविंग मी योर बाइक एंड गोइंग टू आउट फॉर सर्टन स्पेसिफिक डेज. ओके, सो you are giving me your bike and going to out for the certain specific days. Okay, so your bike is near me and there is a mutual agreement between you and me that I have the right to enjoy the benefits from the bike. Okay, I can use the bike, it has been already permitted by you. But the point is, when I
started using the bike or when I am using the bike, I find out that there are certain faults in the bike. For example, there is the petrol is leaking from the bike, or any other issues. The engine is damaged. So there are certain issues with the bike. So here, can I enjoy the specific goods independently? The answer is no. I couldn't enjoy the good very independently. First of all, and it also causes the interference with the use of goods of mine. The bike is under my custody right now. So I have all the rights to enjoy the benefit from the bike. But I cannot enjoy it properly, and my right to enjoy the property or enjoy the goods is being interfered. First thing. Second thing, expose the belly to risk or harm. When the engine system of the bike is damaged, the brake of the bike is not properly working, it might lead to risk or harm of mine. Obviously, when I'll just go through this bike on the road, it might happen that I'll meet an accident due to this. It might happen that on the middle of the road, the bike will be the bike will be suddenly it will be stop working, and due to this I might face any kind of the risk. So here, if you have already been instructed me about the condition of the bike, that this is the real condition of the bike is at the damaged condition where the engine is not working, the petrol is leaking, so just get it repaired and use it, then it is my duty that I will, it is my choice in that duration of the time when you are absent to use the bike or not. I'll decide कि मुझे यूज करना है कि नहीं करना है. अगर करना है तो इसको रिपेयर करके यूज करना है, या ऐसे ही जिस तरीके से वो है उसी को उसी तरीके से यूज करना है, दैट इज अप टू मी. एंड अगर मैं जानबूझ के उसी के बाद भी उतना आप मुझे बता दिए कि बाइक का जो मतलब ब्रेक सिस्टम है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, पेट्रोल लीक कर रहा है, या फिर उसी का इंजन पे कोई दिक्कत है, सो इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग स्टिल आई एम यूजिंग द बाइक एंड आई फेस्ड एन एक्सीडेंट और मेरे को कोई दिक्कत हो रहा है, सो आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? द आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पे आपने मुझे पहले ही कंसर्न कर दिया था कि ये दिक्कत है करके. बट अगर आप मुझसे बात छुपा रहे हो, अगर आप मुझे ये चीज का डिस्क्लोजर नहीं कर रहे हो कि बाइक में दिक्कत क्या है, देन ऑब्वियसली for the sure thing I am going to face any kind of the harm or risk, and this is going to interfere my use of the goods. So if there is any kind of the fault in the specific good, then it is the duty of the bailier to inform the bailee regarding that specific damage or the specific harm, or to inform the bailee regarding the specific fault on the goods. Then comes under this section 150, one more thing has been written. If the bailier does not inform, अगर यहाँ पे जो bailier है ना वो inform नहीं करता है, then the bailier will be responsible for any kind of the injury or losses occurred. अगर bailier जो यहाँ पे है वो अगर inform नहीं करता है to the bailee regarding the any kind of the damages in the bike or any kind of the fault in the bike, so the bailier will be responsible for the losses or injury occurred. यहाँ पे bailier क्या करेगा? He will be responsible for the losses or damages occurred. Okay. And if it is a paid bailment, like hiring a car, the bailier is responsible for the faults even if they don't know about that. Okay. So there are two things has been told over here. First thing, अगर बेलोर को पता होता है कि उस चीज पे या उस स्पेसिफिक गुड पे किसी भी तरह का दिक्कत है, फल्ट है, फिर भी वो जानबूझ के उस चीज को छुपाता है, उस चीज को बताता नहीं है, देन अगर
उसी फॉल्ट की वजह से सामना वाले को किसी भी तरह का नुकसान होता है, किसी भी तरह का हार्म होता है, देन इन दैट स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस द पर्सन is alone capable to the person is alone responsible to recover the losses और डैमेज occurred, क्योंकि उसी को पहले इस चीज को कंफर्म करना चाहिए था, क्लियर करना चाहिए था कि उसी का गुड्स में दिक्कत क्या है। अगर वो चीज को वो नहीं बता रही है या नहीं बता रहा है, अगर वो बात को छुपाया है जिसके वजह से बेली को किसी भी तरह का तकलीफ हुई है, किसी भी तरह का उसी का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, हार्म हुआ है, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू कंपेंसेट द बेली। बेलर का ड्यूटी क्या है कि वो बेली को कंपेंसेट करेगा फॉर द लॉसेस और डैमेजेस ऑकर्ड। ओके, देन कम्स if it is a paid bailment like hiring of a car, the bailer is responsible for the faults even if they don't know about them. Here it comes about the master servant liability. For example, I am hiring you as my servant, or as my I am hiring you, for example, I am hiring you as my servant. Okay, so for example, you have hired a car for the purpose of driving somewhere. Okay, you know, you have heard about the rented car system that is being working very broadly nowadays. So for example, I have booked a rented car in which I am taking the car for the duration of 3 to 4 days for the purpose of traveling. I am going somewhere, that is why I have taken the car as rented. Okay, so when I have rented the car for the duration of 2-3 days, in that specific duration, I started uh, using the car. Okay, and even if here you had no idea that there is certain issues with the brake system of the car, but I also trusted you, what, that yes, you have given me the car and I have signed the contract with the trusted agency, and I trust that the system of the car is fine and I am going to enjoy this ride alone in a very nice manner. But unfortunately, when I started enjoying it, when I started moving on the car, what happened that the system, brake system of the car had been failed. It is not working. And as a result, what happens that the car met an accident and which led me to cause certain injury or damage. So when I am suffering any kind of the injury due to the failed system of the car, brake fail of the car, where I was not aware about this situation, जहाँ पे मेरे को पता नहीं था कि कार यूज करने से मेरे को इसी तरह का नुकसान भुगतना पड़ेगा। एंड आज ये कार ओनर, आपने मुझे कार रेंट पे दिया था, आपको आपको भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि कार का ब्रेक सिस्टम में कुछ दिक्कत हुआ है करके। फिर भी इफ आई मेट एन एक्सीडेंट, अगर मेरे को किसी भी तरह का नुकसान होता है, मेरा हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती हूँ, देन हु विल लायबल टू पे कंपेंसेशन? द आंसर इज यू। That is why you have to pay compensation for that specific thing. Okay. So when we are talking about the hiring of a car, the bailer must be responsible to the faults, and even if they don't know about them. Okay. So what does it mean? Like when the person it's the person is doing a paid bailment, or I am paying you a certain amount for hiring a car. So even if the concealment of the fact is unintentional, because यहाँ पे जो ओनर है उसको भी पता नहीं है कि सिस्टम में कुछ दिक्कत है या ऐसा कुछ है, एंड फॉर विच आई एम मीटिंग एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग द ड्राइविंग ऑफ द कार, देन
It is the duty of the owner to compensate me because I had no idea that what happened. Okay. And it is the responsibility or the faults of the bailor, even if they do not know about them. Okay. So when we are talking about section 3, this is about the bailor's duty to disclose the facts. Then comes section 4, which speaks about the bailie's duty to take care of the goods. And it is explained under section 151 of the Indian Contract Act. So, what does it mean? The bailee must take care of the goods. An ordinary careful person and take care of that person, uh, take care of their own goods of the similar nature. What does it speak by explanation? Explanation means the bailee takes proper care described under section 151. The bailee must take care of the goods as an ordinary careful person would take care of their own goods of the similar nature. Okay. Then comes section 152, which exactly speaks that when is the bailee not responsible for the losses of the goods. Okay. So when we are talking about if the if the proper care has been described under section 151, they are not responsible for the losses, destruction, damages of the goods. And how does it example works? If a bailee stores the goods in sofa, dry place or disaster like food, uh, natural disaster like a flood destroys the goods, the bailee is not responsible at the specific place. Okay. So when we're talking about section 151, let's understand this one by one. The first section 151, it speaks about the bailee's duty to take care of the gold. Okay. So we're discussing about section 151, under which I was explaining you that the bailee must take care of the goods as an ordinary careful person would take care of their own goods of the similar nature. Okay. So, for example, uh, if you have given a gold chain of the jeweler for polishing, the jeweler must handle it as carefully they would handle their own gold jewelry. For example, आप एक ज्वेलरी शॉप में जाते हो, वहाँ पे यू आर गिविंग योर गोल्ड चेन फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिशिंग. आपका जो गोल्डन चेन है आप उसी को दुकानदार को देते हो पॉलिश करने के लिए. ओके. So you must handle it very carefully. Any kind of the thing it is, you have to handle it very carefully as if it was supposed to be handled by the specific owner. Okay, that means the bailor. अगर ये सामान बेलर का है, अगर वो बेलर के पास ही रहता तो वो उस सामान को कितने तरीके से साथ में रखता, वो उस सामान को किस अंदाजा से साथ में रखता, वो उस सामान को कितने अच्छे से संभाल के रखता, वो मैटर करता है. इफ द कंडीशन इज मेट, अगर ये चीज दिख रहा है कि अगर यहाँ पे ओनर होता, अगर यहाँ पे बेलर होता तो वो सामान को जितना अच्छे से संभाल के रखता, आज द बेली में भी सामान को उतना तरीके से संभाल के रख रही हूँ, then it is called the belly's duty to take care of the goods. Okay. Then it has been explained that the belly's duty to take care of the goods. Belly का क्या क्या ड्यूटी है to take care of the goods, that we have already discussed. And we have also discussed that as an ordinary careful person, अगर एक ordinary careful prudence person अपना सामान का जितना ख्याल रखता, वो अगर किसी को अंडर द कंसेप्ट ऑफ द बेलमेंट
कोई भी सामान दे देता है, then it is the duty of that specific person to take care of the property and to be concerned for the specific property. Okay. Then comes when the belly not responsible for the loss or good. Okay. If the belly takes proper care as described under section 151, they are not responsible for the losses, destruction, or damages, uh, or the damages of the goods. Okay. So under section 152, it has been explained that if the belly has taken the proper care of the decided good, यहाँ पे जो belly है, अगर वो जो गुड्स है उसी का सही तरीके से ढंग से केयर ले रहा है, देन they are not responsible for any kind of the losses, destruction or damages to the goods. अगर गुड्स को किसी भी तरह का लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, देन दे आर नॉट responsible for that. Okay. Then comes the example, the belly must the belly must stores the goods uh, in a safe, dry place, but a natural disaster like a flood destroys the goods and the belly is not responsible. Okay. That means it has been clearly stated that if the belly is taking the proper care of the goods, यहाँ पे बेली जो है ना, वो जो गुड्स है उसी का सही ढंग से ख्याल भी रख रहा है, उसी का प्रॉपर तरीके से उसी को सही ढंग से रिस्टोर भी करके रखा है, राइट. So even after taking all the proper and necessary care, till the good has been damaged or destructed due to any kind of the irresponsibility or natural calamities. Okay. So when we are talking about the concept of the bailment, we have understood that the bailer can end the bailment if if the belly if the belly breaks the terms. Okay. That means it has been clearly indicated that अगर ये जो belly है, अगर ये जो बेलर है, when the baler is giving something to belly, for example, you are giving something to the um, dry dry cleaner shop, you are giving something to the dry cleaner shop for the purpose of dry cleaning, you are giving your clothes for the purpose of dry cleaning. Okay. So when I am giving my clothes for the purpose of dry cleaning, I have already observed that the person has done the proper utilized it. Okay. That means the person uh, has taken the proper care as described under section 151. अगर हम सेक्शन 151 की बात करें तो उस सेक्शन के हिसाब से सामान का या गुड्स का जितना ख्याल रखना चाहिए उन्होंने कुछ ज्यादा ही ख्याल रखा उस चीज का. एंड सेकेंडली, द पॉइंट इज they are not responsible for the losses, destruction or damages of the goods. Okay. Moreover, the concept is if the belly has taken the all the possible steps to safeguard the property, to safeguard the specific goods, but due to certain natural calamities or certain situations which is out of control, even after taking all the necessary care, all the possible care, the thing has been destructed. The thing or the good has been destroyed. So here the person or the belly is not responsible for here for the losses, damage or destruction of the goods. यहाँ पे जो belly है ना, वो goods का destruction, damage और loss के लिए responsible नहीं माना जाएगा. Got it? Then comes your section 153, which speaks about the bailor can end the bailment if belly breaks the terms. What does it mean? If the belly does something with the goods that is against the agreed condition, the bailor can end the bailment. What does it mean?
अगर कोई भी चीज बेलर क्या करता है, बेली को देता है, राइट, बट देर आर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस आर एसोसिएटेड विथ हर नॉट, क्योंकि अगर मैं अपना सामान आपको दे रही हूँ देन वहां पे मेरा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी तो एसोसिएटेड है ना. I have certain regulations, I have certain rules, I have certain conditions under which I have given my thing to you. So here, if the belly does something with the goods that is against the agreed conditions, यहाँ पे गुड्स का रख रख गुड्स को सही ढंग से देख रख करने के लिए जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस एसोसिएटेड है ऑन बिहाफ ऑफ द बेलमेंट और ऑन बिहाफ ऑफ द बेलर टू द बेली, अगर बेली उस टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है देन द बेलर हैज द राइट टू एंड द बेलमेंट. बेलर क्या कर सकता है यहाँ पे, अगर वो चाहता है ही कैन एंड द बेलमेंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ए गिव्स ए हॉर्स बी, ए गिव्स बी ए हॉर्स टू राइड. ए क्या किया, बी को एक घोड़ा दिया फॉर द पर्पज ऑफ राइडिंग इट, क्योंकि बी को जो है हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है. तो ए के पास एक हॉर्स है, उसने बोला कि चलो भाई कोई बात नहीं है, तुमको हॉर्स राइडिंग पसंद है, तुम एक काम करो, मेरे पास जो हॉर्स है आप उसी को ले जाओ, आप उसी का देख रख करो, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, तो आप क्या करो, उसी में आपका हॉर्स राइडिंग जो है आप करो, उसी का मजे करो. बट ए ने क्या किया, बी से वो, मतलब ए ने बी को हॉर्स दे दिया फॉर द पर्पज ऑफ राइडिंग इट, बट बी ने क्या किया, उस हॉर्स को लेके ही यूज्ड इट फॉर द पर्पज ऑफ पुलिंग द कार्ट. वहां वो क्या किया, मतलब कार्ट पे सामान रख के हॉर्स को यूज करके सामान पुल करवाने लग गया. सो इज इट द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द हॉर्स? द आंसर इज नो, क्योंकि ये जो हॉर्स ए ने बी को दिया था वो किस पर्पज के लिए दिया था, वो हॉर्स राइडिंग के पर्पज के लिए दिया था, टू एंजॉय द हॉर्स उसने दिया था. बट यहाँ पे ए जो है, बी जो है, हॉर्स का मिसयूज किया. Instead of using it for the purpose of riding by himself, he used the horse for the purpose of pulling a cart. He broke the terms and conditions. यहाँ पे जो एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ था, उन्होंने क्या किया, अपना एग्रीमेंट ही तोड़ दिया. So here the bailment, under this concept of the bailment, the bailor has the right to terminate the bailment. यहाँ पे जो बेलमेंट है, जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को यहीं पे टर्मिनेट किया जा सकता है बिकॉज दिस इज नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस. यहाँ पे बेलर एंड बेली के बीच में जो प्राइमरी कंडीशंस था, जो प्राइमरी टर्म्स था, जो प्राइमरी एग्रीमेंट था, जो प्राइमरी थिंग को लेके उन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, उस बात को ब्रीच हुआ है, उस बात को सही ढंग से नहीं माना गया है. सो हियर the bailor has the right and the bailor has the responsibility. It is up to the bailor, वो क्या करना चाहता है, बट उसी के पास पूरा हक है, अगर वो चाहता है तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बेलमेंट को यहीं पे ही खत्म कर सकता है. ही हैज द राइट टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बेलमेंट ओवर हियर. Then comes your section 7, which speaks about the liability of a bailey for unauthorized use of the goods, which is explained under section 154, point number 7, under the concept of the bailment, and it is explained under section 154, where it speaks about the liability of the bailey for unauthorized use of the goods. If the Bailey uses the goods in a way that was not agreed upon, they are responsible for any damage caused. As I have told you, for example, if if the belly is using the any specific kind of the good which for the unauthorized purpose or breaching the agreement, first of all the bailor has the right to terminate the agreement. और द बेलर हैज द राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट. यहाँ पे बेलर अगर चाहता है तो वो बेलमेंट को एंड कर सकता है. एंड दूसरा बात है कि अगर उस यूज के वजह से, वो अनऑथराइज्ड यूज के वजह से अगर किसी भी तरह का नुकसान हुआ है टू द स्पेसिफिक गुड्स,
then the belly has the right to compensate is, for example मैंने जो बताया प्रीवियस एग्जाम्पल पे, बेलर ने बेली को हॉर्स दिया था फॉर द पर्पज ऑफ हॉर्स राइडिंग, बस बट उसी ने क्या किया, उस हॉर्स को कार्ट पुलिंग के लिए यूज किया। तो अगर हर्ष का तबीयत खराब हो जाता है, अगर हर्ष को किसी भी तरह का नुकसान होता है इस वजह से, पहला बात है कि एग्रीमेंट तो अगर बेलर चाहे तो एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकता है। इट इज अप टू द बेलर कि वो क्या चाहता है, वो बेली को दूसरा मौका देना चाहता है या एग्रीमेंट को यहीं पे खत्म करना चाहता है, ये तो पहली बात है। दूसरा है कि खत्म करने के बाद भी अगर हर्ष को किसी भी तरह का नुकसान हुआ है, देन उस नुकसान का भरपाई कौन करेगा, बेली करेगा, बिकॉज हर्ष को कार्ड पुलिंग का पर्पज के लिए यूज करना अलाउड नहीं था, जो कि वो किया। उसके वजह से अगर हर्ष का तबीयत खराब होता है, हर्ष का किसी भी तरह का दिक्कत होता है, तो उसी का भरपाई कौन करना पड़ेगा, बेली को ही करना पड़ेगा। द बेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द damages occurred. Okay, so this is explained under section 154. From 155 onwards, we are going to discuss in the next class. This is all for today, guys. We can end the class over here. Thank you. Bye bye. Take care.